So मैंने लेजी होके छोड़ के बिकॉज ऑल सारे ब्लैक. अब मेरी पता नहीं क्रिसी ने मुझे फ़ोन करना है मेरी अपॉइंटमेंट के लिए, बट आई लाइक माई बेस टू बी ब्लैक बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि अंदर से ब्लैक हो और पूरा ब्लॉन्ड मत हो. और इसीलिए आई वॉज आस्किंग पीपल बिकॉज आई एम सो कन्फ्यूज कि मैं ब्लू करूं कि यही रहने दूं कि ग्रे पे चली जाऊं. I'm very confused, so let me know. Okay, so I was telling you about Innisfree. So this is a brightening facial cleanser. So I don't use the same thing every day. I go between three things. Like I told you, I use this one, okay? Or I use एक दिन ये वाला किया, एक दिन ये वाला किया, और एक दिन ये किया. This is my scrub from Lush. And it is amazing, yaar. Amazing. It's so good. This is my first time trying it, but it turned out to be really good. And this is the moisturizer. Tir. Now, I don't know how to pronounce it, but आजकल मैं tir की बहुत चीज़ें use करती हूँ. I'm using their face powder. It is out of this world. I'm using this moisturizer all day. This is really good too. I'm using their blush. That's amazing too. सो ये जो टिर में क्या पता नहीं इसको टिर कहते हैं क्या कहते हैं, जो कुछ भी है, दिस इज़ कोरियन टू. प्लीज़ ट्राई इट आउट. दिस इज़ रियली रियली गुड. और ये मेरी वही सेंटेला की सनस्क्रीन लाइक आई टोल्ड यू. एंड दिस इज़ सॉरी इट्स 50+ एंड ऑफ कोर्स वाटर प्रूफ. सो सेंटेला का स्टफ इज़ वेरी गुड टू. सो these are my moisturizer. These are the 3 face washes I go through. 1, 2, 3, and I alternate between these 3. ये नहीं कि रोज़ यही शुरू किया, रोज़ यही किया, रोज़ यही किया. एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये. ठीक है? So let me know how you people do it and what suits you, but I have to be a little careful because I'm not young. I'm an older person. और अभी मेरी स्किन जो है ना, बहुत देर के बाद ये जब मुझे ये लड़की मिली है ना सुमीको, उसके बाद से जब से मैं रिटायर हुई हूँ, I've started taking care of my skin. तब से my skin has started getting better. But now I'll show you pictures of how a doctor in Pakistan, in fact, Dr. Haroon Nabi, जो बहुत famous होते थे कई साल पहले, आज से 10 साल पहले उनके क्लिनिक में कोई डॉक्टर थी और मेरी थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी और उसने लेज़र किया. शी बर्न्ड ऑल माई फेस. आई एम गोइंग टू शेयर दोज पिक्चर्स ओवर हियर कि पाकिस्तान में आप ना किसी को सू कर सकते हो ना कुछ. और उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि धूप में नहीं निकलना, नहीं कुछ. और उसके कमरे से निकलते वक्त भी मुझे नहीं पता कि मेरा मुंह जल चुका है. किसी ने कुछ नहीं कहा. वो तो जब मैंने गाड़ी में बैठ के देखा एंड देन दे सेड कि ठीक हो जाएगा. बट आई शो यू इट टुक 3 years फॉर माई स्किन टू हील. 3 years लगे थे. मेरे बाल तो एक ना, बट आई लव दिस कट बिकॉज मुझे कुछ करना नहीं पड़ता ज़्यादा. एनीवे, सो प्लीज़ ट्राई दीज. और ट्रीटमेंट्स के लिए भी यू नो आई विल शेयर द ट्रीटमेंट्स आई गो फॉर. आई जस्ट गो फॉर आई गो टू दिस जापानीज गर्ल. और दुबई में भी मेरी एक लड़की है, शी इज़ वेरी गुड टू. शी इज़ वेरी गुड ऑल्सो. ठीक है, मुझे उसका नाम Rolla is very good. So Dubai में it's Rolla who does my microblading, and over here Sumiko मेरी करती है every like 2 months derma peeling, I think every 2 months, and मैं microblading करवाती हूँ. So that stays for about a year. Okay, and I might get lip tint this time. I got it last time and I really loved it because अगर आप जॉब करते हो ना तो ये lip tint और आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग ये बहुत आपके काम आती हैं. बिकॉज यू नो व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 5:30-6 बजे आपने स्कूल जाना है, आपका दिल नहीं करता आईब्रोज और लिप्स को करने को. सो दैट वर्क्स. सो दीज आर माई 3 क्लेंजर्स, ओके, दैट आई यूज. अगर मैंने रात को स्ट्रॉन्ग वाला किया तो मेक श्योर यू यूज अ माइल्डर वन इन द मॉर्निंग. ओके. और कई दफ़ा मैं मॉर्निंग में मैंने मास्क लगाया होता है, सो आई डोंट इवन scrub or wash then. I just take it off and do my routine. So these are those 3 things that I wanted to share, and do try out this. This turned out to be really good, and I'll post individual pictures of these 2. Please also share your skin routines and what do you do for mature skin, okay? Because that's what I need right now. Ciao. So like I was telling you guys ke Pakistan mein 2019 में बिकॉज आई हैड गॉट, मेरी स्किन पे कुछ इन्फेक्शन हो गया था आई थिंक
कुछ हो गया था, पिगमेंटेशन हो गई थी. सो पाकिस्तान में देयर इज़ दिस वेरी फेमस डॉक्टर, उसका क्लिनिक था. वहाँ पे मैं एक लेडी डॉक्टर के पास गई. उसने कहा जी ये उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी एंड एवरीथिंग. और उन्होंने कहा कि जी ये ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग, और हम वो लेज़र करेंगे एंड ऑल. एंड यू नो it was a big clinic, known doctor, I trusted them. मगर she burnt my skin. अभी तो आप जो आगे तस्वीरें देखेंगे ना, वो स्किन बर्न होने के 1 महीने बाद है, क्योंकि 1 महीना तक तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी. एंड वो सो पेनफुल कि मेरी चीक्स के नीचे जो बर्न थे ना, वो सब पील कर रहे थे जगह जगह से. और आप अगर गौर से देखें तो फोरहेड वगैरह पे तो वो जो लेज़र उसने पता नहीं कितना तेज़ किया था कि उसके मार्क्स भी बन गए थे. इट टुक 3 years. दुबई में मैंने कोई अच्छा उस क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं छोड़ा, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा. आई इवन वेंट टू प्लास्टिक सर्जन. उनके पास भी मैं गई थी. उन्होंने मुझे साफ कहा था कि इसको हील नहीं होते, ये इतनी ट्रामेटाइज तुम्हारी स्किन हो चुकी है कि ये खुद ही हील होएगी. यू हैव टू गिव इट टाइम. सो ये आप सारी पिक्चर्स ये देख रहे हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये 3 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुआ था. बिकॉज आई स्टॉप्ड यूजिंग एवरीथिंग. मैं एक जेंटल सी, मुझे डॉक्टर ने क्रीम दी हुई थी, सिर्फ एक जेंटल मॉइस्चराइज़र, आई थिंक बेबीज़ का था या कुछ इस तरह का वो था. और वॉश भी बिल्कुल जेंटल सा था, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी. एंड आई हैड टू स्टे अवे फ्रॉम द सन एंड आई वॉज वर्किंग. सो इट वॉज़ रियली वेरी हार्ड. बट कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से मुश्किलें आती हैं. 3 साल तक मैं इसी तरह, मेरी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती रही. एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल पुट पिक्चर्स ऑफ बिफोर. दीज आर पिक्चर्स ऑफ बिफोर. आई पुट पिक्चर्स ऑफ आफ्टर, कि आप देखेंगे कि ग्रेजुअली कैसे ठीक हुई. और वो इस तरह ठीक हुई कि आई स्टार्टेड for when I moved to Canada, I started going to this girl Sumiko, and she said it will go away, but you know you have to stay away from the sun, और हम इसका डर्मा वो करेंगे, something derma, I don't know what, abrasion or something like that, peel करेंगे. मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने सोचा जहाँ इतना कुछ हो गया, let's give it a try. And I got it done every 2 months, and you can see the difference in my skin. So इसीलिए I'm sharing my skincare routine and the things I use, because I feel less is better. एक तो आपको चेंज करते रहना चाहिए, और ऊपर से I think instead of using a lot of products, it is better to use very few products. और वैसे आप अपनी क्लेanliness का, और आई थिंक डाइट का और एक्सरसाइज का, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू स्किन स्पेशलिस्ट. प्लीज़ अपनी रिसर्च करके जाएं, सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू. स्टे सेफ.